Hello children, we are continuing with the lesson of economics, chapter 2, indicators of economic growth and development. As we have already understood in the first video, what is the meaning of economic growth and economic development. So we all know that economic growth is a quantitative term, whereas economic development includes both quantitative as well as qualitative aspects. What are the quantitative aspects? Like in economic growth, we include national income, per capita income, production, GDP, which can be measured. Whereas in economic development, we include all of this. That means economic growth is already included in economic development. Along with that, we include some psychological and institutional aspects. So economic development is a wider concept. It takes a long time. It has quantitative as well as qualitative aspects, and it is difficult to measure because we need to know about people's sanitation, people's education, people's employment, poverty. So all these things are included in economic development. Now we want to look at the definitions given by some economists. So we are going to look at the first definition and try to understand it. So let us have a look. The first definition is given by Michael Todaro. And what does he say? Let us look at the definitions one by one and clearly understand them. So Michael Todaro says, economic development is a multi-dimensional process. What is he saying? Economic development is a multi-dimensional process. Multi-dimensional means what? It includes many things. Like we have already talked. You have understood that, right? It includes sanitation, education, employment, whether people are having good per capita income, whether the distribution of income is equal or not. If in any country the distribution of income is unequal, like in a country like India, can we say that total economic development is there? No, because poor are getting very less, whereas the rich are getting more. So we cannot say economic development is completely there. That's why we are a developing country. So that is the first thing, the first definition given by Michael Todaro. We will stop here. Hello children. Now we continue with the definitions of economic development. The second one is given by J.M. Mayer. J.M. Mayer says, economic development is such a process when, now pay attention, there is no increase in population living below poverty line. मतलब कंट्री में पॉवर्टी बढ़नी नहीं चाहिए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल सकते हैं. Second condition he is giving, there is no increase in inequality of income distribution. Inequality of income distribution means what? गरीब और अमीर जो कमा रहे हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ओके. थर्ड कंडीशन ही इज गिविंग इज देयर इज कंटिन्यूअस राइज इन पर कैपिटा इनकम of a country for a long period of time. What is per capita income? Per capita income means average income of a citizen. In a large country like India, what we need to do to find out per capita income of any country? Take the total national income and divide it by total population. When you divide total national income by total population, you get the average per capita income.
सो पर कैपिटा इनकम का क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली वो बढ़ना चाहिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओवर मैनी ईयर्स. तो जेएम मेयर इज सेइंग कि सो देन ओनली वी कैन से कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ अकर्ड इन दैट कंट्री. अंडरस्टूड. क्या क्या नहीं होना चाहिए, पॉवर्टी बढ़नी नहीं चाहिए, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ना नहीं चाहिए, और क्या बढ़ना चाहिए, पर कैपिटा इनकम कॉन्स्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते रहना चाहिए. तो मेयर बोल रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज दैट प्रोसेस, राइट. अभी जो लास्ट है दैट इज मैकलप, MACHLUP. मैकलप क्या बोल रहा है, उसने कौन कौन सी कंडीशन रखी है अच्छे से, यू कैन कॉपी दिस थिंग्स, it is also given in the textbook, but how to write it point wise, and then it becomes also easy to remember. So you can pause the videos, copy it from here. Let us look at what MACLUP is saying. MACHLUP. So what is MACLUP saying? MACLUP is saying economic development is a process of इंक्रीज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. पहली कंडीशन उसने क्या रखी है, इंक्रीज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो नाउ वी नीड टू नो व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. रिमेंबर व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट आर दे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर. एंटरप्रेनर मीन्स जो बिजनेस करता है वो एंटरप्रेनर. तो क्या होना चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेनर्स, पहले तो बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा उस कंट्री में. दूसरा क्या, लेबरर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लेबरर्स को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए. तीसरा क्या, लैंड, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड में क्या बने होने चाहिए, फैक्ट्रीज बने होने चाहिए. और चौथा क्या है, कैपिटल, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बिजनेस में लगा हो. तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दूसरी कंडीशन उसने रखी है, चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. पुराने ज़माने के टाइम से जो चल रहा है उसी तरह से ना प्रोडक्शन ले, लेकिन नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले, ये ज़रूरी है. इसलिए क्या होना चाहिए, चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी. एंड द थर्ड कंडीशन इज दैट ये सब करते हुए नेचुरली पर कैपिटा इनकम should go on increasing, and if per capita income goes on increasing, what will also increase, standard of living also rises. तो तीसरी कंडीशन है, per capita income and standard of living should increase even if population remains constant or it increases. That doesn't matter, population increase हो कि same रहे. Understood?